Hello students, welcome to my channel. This is the last part of exercise 2.2 of sequence and series. Let's start question number 7. Find the sum to n terms of the sequence 0.5, 0.05, 0.005 and so on. See here you have to observe the type of sequence is not mentioned. It is not EP or not in GP. Okay. Find the sum to n terms of sequence. If it is GP, then you have to apply SN formula for GP. Sum to n term means you have to find out SN. Okay. If it is AP, then you have to apply SN formula for AP. So, first you have to find out, or first you have to show that the given sequence is a GP. Okay, how to show that it become a GP? It's very simple, just you have to apply definition. What is the definition of GP? That is ratio of any two consecutive term is a fixed number, is a constant number. Means T2 upon T1 is equal to T3 upon T2 is equal to T4 upon T3 and so on. It become a fixed number. So here you have to you have to show that it is a GP. Solution: let A is equal to, or here A means T1. What is T1? First term is 0.5, T2 is 0.05 and third term is 0.005. Consider T2 upon T1. Substitute both the values here. That is 0.05 upon 0.5 becomes 0.1 and T3 upon T2 after simplifying it become also 0.1. Means here the ratio of second term upon second term and first term, also third term and second term is a same number, means 0.1 is a fixed number. So the given sequence is a GP. If it is GP, then you have to apply SN formula for GP. Here A is equal to 0.5 and R is equal to 0.1, that is less than 1. So you have to apply 1 minus R is to n formula, that is we have Sn is equal to A into bracket 1 minus R is to n upon 1 minus R. Now you have to substitute both the values A and R. That is nothing but Sn is equal to, what is A? 0.5 into bracket 1 minus 0.1 bracket raised to n upon 1 minus 0.1. See here 0.5 means 0.5 means 5 upon 10. Okay, and 0.1 means 1 upon 10. You have to substitute these values, you have to simplify this, you will get Sn. What is 0.5? 5 upon 10 into bracket 1 minus 1 upon 10 bracket raised to n upon 1 minus 1 upon 10. Now you have to simplify denominator taking LCM and cross multiplication here. Numerator keep as it is, that is 5 upon 10 into bracket 1 minus taking separate power here, 1 raised to n is 1 upon 10 raised to n upon 10 minus 1, that is just you have to simplify this denominator by cross multiplying. Here 10 get cancelled. How much is that? 10 minus 1, 9. And that is nothing but 5 upon 9 into bracket 1 minus 1 upon 10 raised to 9. If the sequence is like this, if the sequence is 0.4, 0.04, 0.004 and so on, then Sn is equal to, what is Sn? It's a trick, you remember this trick, 4 upon 9 into bracket, this factor keep as it is, 1 minus 1 upon 10 raised to n, that's it. Okay. If the sequence is suppose 7, instead of this is 7, 0.07, 0.007, the final answer is Sn is equal to 7 upon 9 into bracket 1 minus 1 upon 10 raised to n. That's it. Okay. Now the next part or the next question
is find the sum to n terms of the sequence 0.2, 0.02, 0.002. What is the final answer? 2 by 9. The final answer is, see, 2 by 9 into bracket 1 minus 1 upon 10 raised to n. This is the final answer. Okay, but this method you have to apply in CET exam or JEE mains, means competitive exam. Don't apply for HSC method. Now first you have to show that it is a GP. Here T1 is equal to 0.2, T2 is equal to 0.02 and T3 is equal to 0.02. 0.002. Consider T2 upon T1. Its ratio is 0.1. Okay. So it is a GP. Here A is equal to 0.2, R is equal to 0.1, that is less than 1. So we have Tn is, Sn is equal to A into bracket 1 minus R is to n upon 1 minus R. Substitute both the values. After simplifying, you will get the same answer, 2 by 9 into bracket 1 minus 1 upon 10 raised to 9. That's it. Okay. Now question number 8 from your textbook. For a sequence, if Sn is given, what is Sn? 2 into bracket 3 raised to n minus 1, find the n terms, hence show that the sequence is a GP. Now you have to observe here, Sn is given means sum of n term is given of the sequence. Sequence is any, okay, and its sum is given, sum of n terms is given. Now you have to show that the sequence is a GP. First you have to show that the sequence is GP. Okay. Only one value is given, Sn is given. Right? Sn is given. See, we have one formula. See, what is Sn? Sn is equal to sum of first n terms, that is T1 plus T2 plus T3 plus T4 plus T5 up to T suffix n minus 1 plus Tn. Okay. First n terms, sum of first n terms, right? What is S suffix n minus 1? It is nothing but T1 plus T2 plus T3 up to T suffix n minus 1. What is S5? S5 is nothing but T1 plus T2 plus T3 up to T5. Am I right? So S suffix n minus 1 is T suffix 1 plus T2 plus T3 plus T4 up to T suffix n plus 1, n minus 1. So you have to observe here. See, in this sum, see, T1 plus T2 plus T3 up to T suffix n plus 1. From this, it become S suffix n minus 1. So, we have Sn is equal to S suffix n minus 1 plus Tn. Am I right? S suffix n minus 1 plus Tn. From this equation, you will get Tn. What is Tn? Tn is nothing but this one, transfer this side. So you will get S suffix n minus 1 is equal to S suffix n minus x suffix n minus 1 is equal to Tn. Now you must remember this formula here. That is nothing but, see, this is important formula, S suffix n minus S suffix n minus 1 is equal to Tn. Because of, see, here you have to show that this sequence is GP. What is the definition of GP? That is, definition of GP is nothing but the ratio of any two consecutive term is a fixed number. That is, you have to show that
t suffix n plus 1 upon tn, you have to show that t suffix n plus 1 upon tn is constant number. Okay, so we need tn. That's why you have to find out tn by using this formula. You must remember this formula. What is tn? S suffix n minus s suffix n minus 1. Okay, now let's start the solution. Here Sn is equal to 2 into bracket 3 raised to n minus 1. Therefore you have to find out s suffix n minus 1. Replace n by, देखिए यहाँ पर जहाँ पर n होगा वहाँ पे n minus 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे. s suffix n minus 1 is equal to 2 carry as it is, bracket 3 also carry as it is. What is bracket raised to, what is raised to, what is the power n, n के बजाय हम n minus 1 डालेंगे, minus 1 as it is. Okay, minus 1 as it is. For any sequence we have tn is equal to Sn minus s suffix n minus 1. Substitute both the values here, that is 2 into bracket 3 raised to n minus 1 minus 2 into bracket 3 raised to n minus 1. यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे हम, टेकिंग 2 कॉमन. ओके, तो यहाँ पे जो माइनस से माइनस 1 प्लस 1 गेट कैंसिल. देखिए यहाँ पे ये कॉमन लेने के बाद देखो 2 अगर कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे एक स्टेप हमने स्किप किया. यहाँ पे 2 अगर कॉमन ले लेते हैं इनसाइड 3 रेस्ट टू n माइनस 1, ये माइनस ओपन करेंगे हम, दैट इज माइनस 3 रेस्ट टू n माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1, प्लस 1 माइनस 1 गेट कैंसिल. हाउ मच इज दैट? 3 रेस्ट टू n माइनस 3 रेस्ट टू n माइनस 1. ओके, दिस इज tn. अगेन यहाँ से हम 3 रेस्ट टू n माइनस 1 वो भी कॉमन ले सकते. ओके, दैट इज 2 इंटू 3 रेस्ट टू n माइनस 1 बिकॉज ऑफ, सी हियर, because of 3 raised to n, 3 raised to n के अंदर 3 raised to n minus 1 होता है. 3 raised to n minus 1 plus 1 means 3 raised to n here. तो यहाँ पे 3 बच जाएगा और ये minus 1 आ जाएगा. 3 minus 1. How much is that 3 minus 1? Again 2. Okay, means 2 into 2, right? Tn is equal to 2 into 3 raised to n minus 1 into 2. 3 minus 1 is 2. That is 4 into 3 raised to n minus 1. हमें यहाँ पे tn मिल गया. Okay, now you have to find out t suffix n plus 1. आप t suffix n minus 1 भी निकाल सकते हैं. Okay, क्योंकि कॉन्जुगेटिव टर्म t n के बाद का टर्म निकाल सकते हैं, या तो फिर t suffix n minus 1. तो हम यहाँ पे t suffix n plus 1, क्योंकि प्रीवियस सब में हमने इसी तरीके से किया था, तो 4 इंटू 3 रेस्ट टू, जहाँ पर n होगा वहाँ पे n plus 1 minus 1 डालेंगे हम. Now here plus 1 minus 1 get cancel, both get cancel. After cancelling this, that is 4 into 3 raised to n. That's it. Okay, consider t suffix n plus 1 upon tn, right? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ये कॉमन टर्म कैंसिल हो रहे, 4 4 गेट कैंसल. तो हम लॉज ऑफ इंडस्ट्रीज अप्लाई करेंगे. 3 रेस्ट टू n अपॉन 3 रेस्ट टू n माइनस 1, दैट इज माइनस n प्लस 1. Here this get cancelled, it become 3. Okay, it become 3 means which is equal to 3 and which is constant number. Hence the sequence is, therefore the sequence is GP with common ratio 3. Now you can easily find out Tn, but Tn already here mention here. What is Tn? Tn is equal to, here Tn is equal to 4 into 3 raised to n minus 1. Okay, it is a GP, a common ratio is 3 and Tn is equal to, you can mention here one more step, that is Tn is equal to, what is Tn? 4 into 3 raised to n minus 1. This is n term, क्योंकि mention किया है क्वेश्चन में to find out n terms, right? To find out n terms. So यहाँ पे Tn निकाल सकते हैं आप. Now the next question, extra question of same type. For a sequence, if Sn is equal to 3 into bracket 2 raised to n minus 1, थोड़ा सा चेंज किया यहाँ पे, सेम स्ट्रक्चर है, 3 के बजाय 2 ले लिया, 2 के बजाय 3 ले लिया यहाँ पे. फाइंड n टर्म्स, हेंस शो दैट इट इज जीपी, ऑल्सो फाइंड कॉमन रेशियो. ओके, एकदम आसान पार्ट इसमें, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इफ S is the first, sorry,
If capital S is the sum, capital P is the product, and R is the sum of reciprocals of n terms of a GP. Means capital S is the sum of the n terms, capital P is nothing but product of n terms, first n terms, and capital R is the sum of the reciprocal of first n terms of a GP. Then prove that P square is equal to S upon R bracket raised to n. Such type of question having 4 marks. ओके तो यहाँ पे S मिल गया हमें, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स. ओके सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स. एस क्या दिया है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म दैट इज T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 अप टू Tn. ओके अगर हम T1 T2 ऐसा लेंगे तो मुश्किल हो जाएगा. अगर A इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म लेते हैं हम, A इज द फर्स्ट टर्म. ओके A इज द फर्स्ट टर्म एंड व्हाट इज द common ratio? R is the common ratio. What is the definition of GP? A second term can be obtained by multiplying a fixed number R to previous one. What is third term? A third term can be obtained by multiplying R to previous second term, that is AR square, AR cube and so on. Okay, इस तरीके से यहाँ पे terms मिल गए हमें, right? Means AR ए सफिक्स आर, ए आर स्क्वेयर, ए आर क्यूब, इस तरीके से ए सफिक्स आर इज टू एन माइनस वन, ये एन टर्म मिल जाएगा. राइट सी यहाँ पे आर इज टू जीरो है फर्स्ट टर्म का, सेकेंड टर्म के लिए आर इज टू वन है, थर्ड टर्म में आर स्क्वेयर है और लास्ट टर्म में आर इज टू एन माइनस वन. तो दीज आर द एन टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस. इंस्टेड ऑफ T1 T2 ये लेने के बजाय हम ए में लेंगे, ए एन आर में लेंगे. ओके तो एस लिखेंगे इस तरीके से. राइट तो यहां पर देखिए सॉल्यूशन स्टार्ट करें हम. लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड आर बी द कॉमन रेशियो ऑफ जीपी. सो कैपिटल एस इज इक्वल टू सी T1 प्लस T2 अप टू Tn. व्हाट इज कैपिटल एस? A plus AR square up to A suffix R is to n minus 1, and we have this formula. Okay, we have this formula A into bracket R is to n minus 1 upon R minus 1. Okay, now what is P? P is a product, means first term into second term into third term into fourth term up to n term. So यहाँ पे देखिए A into A कितने A दिख रहे हैं यहाँ पे? nth A दिख रहे हैं. means suppose 2 into 2, 2 square. ओके x into x 5 टाइम्स x रेस टू 5. तो यहाँ पे a into a n टाइम्स है तो a रेस टू n इंटू ब्रैकेट r into r स्क्वायर into r क्यूब अप टू r रेस टू n माइनस 1. ओके तो ये आ जाएगा r रेस टू बाय लॉज ऑफ इंडक्सेस a रेस टू n इंटू ब्रैकेट r रेस टू 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n माइनस 1. देन इसका एडिशन आएगा दैट इज n माइनस 1 अपॉन n minus 1 into n upon 2 because of sum of n terms, sum of first n terms. You can apply ये 10th standard में पढ़ चुके आप. SN formula for AP. This sequence is an AP. SN formula for AP. Last term into bracket last term minus 1 upon 2. तो ये आ जाएगा P is equal to A raised to n, right? P is equal to A raised to n into r raised to n minus 1 into n upon 2. But here in solution P square we need P square. So consider P square is equal to A raised to n into bracket, see what is P, डायरेक्ट लिखा तो भी चलेगा. P is equal to दिया है A raised to n into bracket r raised to n into bracket n minus 1 upon 2. ओके देन स्क्वेयरिंग, ये स्क्वेयर आ जाएगा, इट बिकम a रेस टू 2n इंटू ये 2 कर चला जाएगा यहाँ से, दैट इज r रेस टू n इंटू ब्रैकेट n माइनस 1. ओके सी दिस इज द वैल्यू. p स्क्वेयर इज इक्वल टू a रेस टू 2n इंटू r रेस टू n इंटू ब्रैकेट n माइनस 1. सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन नंबर 1. नाउ s we get s as well as p. Now r. What is r? Sum of reciprocals of n terms. Means what is first term? A, its reciprocal is 1 upon a. Second term is AR, its reciprocal is 1 upon AR. तो इस तरीके से यहाँ पे up to
यहाँ पे प्लस डैट डॉट 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 प्लस 1 अपॉन ए इंटू आर एस टू एन माइनस वन, इस तरीके से ये प्लस डॉट डॉट चाहिए वहाँ पे। ओके, थोड़ा सा करेक्शन कीजिए अभी। देन यू हैव टू सिंप्लीफाई दिस। 1 अपॉन ए यहाँ पे सिमिलर दिख रहा है, 1 अपॉन ए कॉमन ले लो, से देन इट बिकम 1 प्लस 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे डॉट डॉट चाहिए, यहाँ पे डॉट डॉट डॉट। ओके, देन इट बिकम, see this is a sequence whose common ratio is 1 upon r fixed, that is the GP. Then you have to apply SN formula for GP, that is 1 upon r into bracket, what is A? 1 into bracket 1 minus 1 upon r bracket raised to n upon 1 minus r, because अब हमने r कंसिडर किया था r is greater than 1, तो 1 upon r क्या आ जाएगा, दैट इज लेस देन 1 आ जाएगा, रेसिप्रोकल। ओके, लेस देन 1, तो सेकेंड वाला फॉर्मूला अप्लाई किया यहाँ पे, राइट, सेकेंड वाला फॉर्मूला। देन इट बिकम, जस्ट यू हैव टू सिंप्लीफाई दिस, दैट इज नथिंग बट 1 अपॉन आर, यहाँ पे सेपरेट पावर ले लेंगे, 1 माइनस 1 रेस टू एन इज 1 अपॉन आर रेस टू एन अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई हियर, दैट इज आर माइनस 1 अपॉन आर, तो यार ऊपर चला जाएगा यहाँ पे। ओके, आर अपॉन ए, correct, that is nothing but, after simplifying it become, see r is to n minus 1 upon r is to n upon r minus 1 upon r, correct, तो यहाँ पे r is to n minus 1 ले लो यार, r ऊपर ले लो, it is nothing but r is equal to capital R is equal to 1 upon r 1 upon a, और r upon a भी लिख सकते हैं आप, this is the r। okay, और you can simplify this, r is equal to 1 upon a into r is to, ये नीचे ले लिया आप 1, सी r by laws of indices, r upon n is nothing but 1 upon r is to n minus 1, यहाँ पे n है, यहाँ पे पावर 1 है, तो n minus 1 आ जाएगा। ओके, इट बिकम r, सो s upon r, कंसिडर s upon r, तो यहाँ पे देखिए यही पे आप कैंसिल कर सकते हैं, r minus 1 get cancel, okay, r minus 1 get cancel, this get also cancel, right, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये जो है ये फैक्टर ऊपर जाएगा। ओके, तो a स्क्वायर ब्रैकेट रेस टू, therefore s upon r is equal to a square into r is to n minus 1, r is to n minus 1, right, and consider s upon r bracket raised to n is equal to, इसका पावर n ले लेंगे, that is a raised to 2n into r raised to n into bracket n minus 1, this is second। from 1 and 2 we get p square is equal to s upon r bracket raised to n, and this is the final answer। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, जस्ट यहाँ पे एस एन फॉर्मूला अप्लाई करना है एंड लॉज ऑफ इंडाइसेस, कुछ भी नहीं इसके अंदर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, इफ s suffix n, s suffix 2n and s suffix 3n are the sum of n or n terms, first 2n terms, first 3n terms of GP, then verify that Sn into bracket s suffix 3n minus s suffix 2n is equal to s suffix 2n minus Sn the whole square। ये भी सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पे Sn इज इक्वल टू व्हाट इज Sn, Sn इज नथिंग बट सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स है, s suffix 2n इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट n, n इज इक्वल टू 2n रहेगा, और n इज इक्वल टू 3n यहाँ पे रह सकता है। तो here we need a and r, let a be the first term and r be the common ratio of GP, then Sn is equal to a into bracket r is to n minus 1 upon r minus 1, s suffix 2n सेम टाइप का फॉर्मूला, जस्ट यहाँ पे n की जगह 2n डालेंगे, a into bracket r is to 2n minus 1 upon r minus 1 and s suffix 3n is equal to a into bracket 3n minus 1 upon r minus 1। कंसिडर, अभी LHS लेंगे हम, कंसिडर LHS is equal to Sn into bracket s suffix 3n minus s suffix 2n is equal to what is Sn, a into bracket r is to n minus 1 upon r minus 1, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, ये ब्रैकेट के अंदर दो फैक्टर आना चाहिए, डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स, s3 माइनस s suffix 3n माइनस s suffix 2n, तो s suffix 3n की वैल्यू डाल दी हमने,
माइनस एस सफिक्स 2n की वैल्यू यहाँ पे डाल दिए। अभी यहाँ पे देखिए ए कॉमन दिख रहा है हमें, ए सिमिलर दिख रहा है, ओके, एंड आर एस टू ये यहाँ पे सेम दिख रहा है, एंड आर एस टू सॉरी आर माइनस वन अगेन सेम। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम आर एस टू मीन्स ए इंटू ए स्क्वेयर आ जाएगा यहाँ पे, ए स्क्वेयर इंटू आर एस टू एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन द होल स्क्वेयर इंटू ब्रैकेट आर एस टू थ्री एन माइनस आर एस टू टू एन, इस तरीके से आ जाएगा, ओके, इस तरीके से सम आ जाएगा। दैट इज ए रेस टू सी a into bracket r raised to n minus 1 upon r minus 1 the whole square, then it become यहाँ भी लिख सकते हैं हम ए स्क्वायर, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे r raised to 3n माइनस r raised to 2n, r raised to 2n भी कॉमन ले सकते हैं हम, इट बिकम a into bracket r raised to n minus 1 upon r minus 1 the whole square into bracket a into r raised to 2n into bracket r raised to n minus 1, and that is nothing but a square into r raised to 2n into bracket r raised to n minus 1 into r raised to n minus 1, that is whole square upon r minus 1 the whole square. This is equation number 1. LHS मिल गया हमें, okay. Now RHS, what is RHS? RHS is equal to s सफिक्स 2n माइनस sn द होल स्क्वायर। अब यहाँ पे s सफिक्स 2n वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम, माइनस s सफिक्स n द होल स्क्वायर। अभी यहाँ देखिए a कॉमन है, r माइनस वन भी कॉमन है, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं a स्क्वायर अपॉन r माइनस वन द होल स्क्वायर इंटू ब्रैकेट, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे यू कैन स्किप दिस स्टेप, ये स्टेप स्किप कर सकते हैं आप डायरेक्ट लिख सकते हैं a स्क्वायर अपॉन r माइनस वन द होल स्क्वायर इंटू ब्रैकेट r एस टू 2n माइनस r एस टू n द होल स्क्वायर, राइट। नाउ again you have to take r raised to n common ले सकते हैं यहाँ पे, r raised to n common, you will get a raised to 2 or means a square upon r minus 1 the whole square into bracket r raised to n into bracket r raised to n minus 1 the whole square। तो ये सेपरेट पावर ले लेंगे, it become r raised to 2n and ये whole square आ जाएगा, that is nothing but a square into bracket a square into r raised to 2n into bracket r raised to n minus 1 the whole square upon r minus 1 the whole square, and this is equation number 2. From first and second we get LHS equal to RHS, that is s suffix sn into bracket s suffix 3n minus s suffix 2n is equal to s suffix 2n minus s suffix n the whole square. Hence the proof.